मैं अभी गेम प्ले कर रहा हूँ गेंशिन इम्पैक्ट का। तो चलिए देखते हैं। एक स्टोरी मोड था मेरा, देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है कंप्लीट। यस, तो आज मैं सॉन्ग ऑफ द ड्रैगन एंड फ्रीडम का करने वाला हूँ। When the wind dies down. Okay, you finally managed to save Darlene is where your story of wind ends. Okay. तो अभी देखते हैं, शायद ये बोल रहा है अभी विंड का जो स्टोरी था, अगर आपने मेरा पुराना वाला नहीं देखा है, मैंने ड्रैगन को भी बीट किया है, तो आप वो वीडियो मैंने नीचे दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलो अभी टेलीपोर्ट करते हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल को तो अभी जाके सब्सक्राइब करो, अब भी जाके, क्योंकि मैं गेम प्ले बहुत अच्छे से लाता हूँ। एंड्रॉयड गेम प्ले जो आपने कभी खेला नहीं रहेगा वो भी लाता हूँ, आपके हेल्प के लिए, कि आपको डिसाइड करने मिले कौन सा गेम खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। तो चलिए गेम पे आते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ अगर ये गेम ऑनलाइन खेलना, अगर आप कोई खेलता रहेगा फ्रेंड्स, तो मैं आईडी मेंशन कर देता हूँ नीचे, और टाइम भी मेंशन कर दूंगा कब मैं ये खेलूँगा, तो वो टाइम पे आप आ सकते हो और हम लोग ऑनलाइन मोड खेल सकते हैं। ये कौन है भाई? साइरस। Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. The age of adventure is upon us. ड्रैगन को बीट किया तो इसलिए वो सब बता रहे होते। Join the Adventurers Guild today. In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt. अच्छा, गिल्ड ज्वाइन करने बोल रहा है। What? The storm terror threat is resolved. भाई पागल है, कहाँ था ये? Grandmaster's speech? Storm terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. अबे भाई सोया हुआ था क्या तू? तेको पता ही नहीं चला क्या कंप्लीट हो चुका है मिशन? अभी किसके पास जाना है? निम्रॉड। अभी सबसे बात ही करना रहेगा क्या? Where's the action man? अच्छा यही है, इसका क्या सीन है देखते हैं। Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the storm terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. क्यों भाई, वाइन इतना इम्पोर्टेंट है क्या? I cannot imagine a world without wine. ओह, I hope they get the trade routes back up and running soon. इंडिया के जैसे अब इसको भी वाइन ज़्यादा चाहिए। अरे अब यार सच में पका रहा है भाई, सबसे एक जगह क्या बात करता रहूँगा क्या मैं? पागल वागल हो गया क्या? So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. Okay. For that, we have you to thank. हाँ ठीक है भाई, मैंने तो मारा है उसको, ड्रैगन को। devotion. डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था सच में, लेकिन सच में मार ही दिया मैंने। ओके, स्टॉर्म ट्रेडर ट्रू आइडेंटिटी। अभी किससे मिलना है? सच में पका रह रहे लोग। हड़बे। Oh, Knight of the Famous. Greetings. May I take your... Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Oh yeah, I didn't see you there. ये बोलता हूँ, handsome. Ah, so you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know.
Believe me, I'd much rather be taking out the trash. Okay. So what you thinking about then? The Abyss Order. Okay, The the Abyss dragon Order. wreaks havoc in Mondstadt, and the वो acting देख रहा था। Grandmaster leaves the city to combat the threat. वो Abyss Order का तो बहुत मुश्किल Strategically, था यार। that's the हम वही perfect देखते हैं। moment for the Abyss Order आगे to लग make रहा है their मेरे को move. वही स्टोरी पे जाएगा। If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? हाँ, To get to the ये भी सही bottom बोल of रहा है। it, I decided to wait. So I What's waited the next move? and watched for their next move. Then क्या came the है? day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? हाँ Well, हाँ, all the अभी other लगता है knights were वो outside, fighting the enemy. Abyss Order का कुछ सीन होने As वाला you है। can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. पता है वो लीडर एक बार शायद आया था। शायद वो लीड ही ना Yes. हो रहेगी। आपने It देखा was रहेगा, this कोई very देखा रहेगा तो leader मेरा who वीडियो devised the कि plot आप to तो कोई turn खेलते Devolin रहेंगे into तो a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. Now, बोला था ना वो I'm एक lady sorry है। to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. Oh, I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better better slip slip away away. before she notices me. भाग जा भाई, बहुत मारेगी तेरे को। टक, अभी देखते हैं भाई स्टोरी कहाँ पर जाता One है। minute ये by एम्बर आ गई। Sakaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. अब Let's इसको तो order. भूख ही लगता रहता है जब Hi, मैं Sarah. तो- One sticky honey roast, please. तू खा, मैं जाके आता हूँ। सारा ठीक है। सीड बाय एम्बर। अरे बाबा रे, लगता है आज इसके साथ मेरा डिनर होने वाला है। अच्छी डेट तो नहीं है कम से। हाँ, मैंने लगता है टॉम ट्रे से बजाय डेट मिल रहा है मेरे को। So, now the storm terror threat is behind us. Paimon thinks Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. हाँ, देखा क्या, मेरे को लग ही रहा था। Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and our honorary knight. Wherever you may go, and wherever the winds may blow. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. ओह, लगता है मेरा All right, मॉन्स्टर का now स्टोरी यहीं let's खत्म eat हो गया। before it gets cold. You enjoy relaxing meal time। अच्छा चलो भाई, पेट तो भर गया मेरा, रिलैक्सिंग that मील टाइम was करेंगे। good. Note to Paimon. खाते हुए तो दिखा Amber's लेते यार तुम लोग। recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something What? to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better Oh. head there now. अभी चीन के साथ जाके मिलना पड़ेगा मेरे को। कैथेड्रल में है, चलो जीन से मिलते हैं। क्वेस्ट कंप्लीट। ओप्सी, कैंसिल हो गया मेरे से। चल भाई उड़ जा, पेट फुल हो गया रहेगा तेरा अभी तक तो। सॉरी गाइस, थोड़ा अगर लैग होता रहेगा तो थोड़ा आज नेट का थोड़ा इशू है और स्टोरेज फुल है मेरा। पहले तो दिखाता नहीं था रे ऐसा। किधर है ऑप्सी? चल भाई जल्दी चल। ये यहाँ से क्यों लेके जा रहा है जब बीच में है? चल
चल ट्राई करते चढ़ने का। One, two, three. किधर है भाई? चलो अंदर जाते हैं अभी। ये कैरेक्टर मिला था मुझे अभी लेटेस्ट में, इसको मैंने फुल अपग्रेड नहीं किया है अभी, देख सकते हो। आपके पास कौन सा पावरफुल कैरेक्टर्स है इसमें यार, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है यार मुझे आप बताइए, तो मैं भी खेलने का ट्राई करूँगा। ऐसा कोई स्टोरी मोड या एक्शन कोई गेम रहेगा तो मुझे बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट सबका रिप्लाई भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो कुछ अच्छा गेम रहेगा एक्शन या स्टोरी वाली तो कमेंट ज़रूर करिए। अभी चालू हो जा। बहुत लोग लेट रहा है यार ये, मतलब सही बनाया मेरे को गेम, बहुत अच्छा लगा है ये एंड्रॉयड में। आ गया, देखते क्या बोलते हैं। अभी ये बारबरा है क्या? मेरे को ये भी कैरेक्टर मिला है। I'm not really in a position to speak compared to our acting grandmaster, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. अभी मैं सोच रहा अभी कौन सा स्टोरी रहेगा। Sounds like quite the story. So, ड्रैगन तो बीट हो गया है। bring the holy lyre with you? वो बेस ऑर्डर मेरे को लग रहा है जो प्रिंसेस है keep defending the lyre उसको forever. फाइटिंग करना रहेगा। The seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... It's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. ठीक है भाई, चर्च है तो स्पेशल फंडिंग तो मिलेगी। The holy lyre! The Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough. क्या ओवर एक्टिंग कर रही है रे? Oh, give it here. ये कुछ जादू करेगा क्या? वाह वाह बेटा वाह, अरे बना दिया। How could this holy lyre? But how? Huh? Let Paimon see! No, no. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. कहाँ लेके भाग रही है? ठीक किया उसने, थैंक्स तो बोल दे। I really should get going. That trick I used to repair the holy lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You tone deaf bark! अबे क्या कर दिया इसने अभी? Books when you come across term worth keeping they will automatically enter your archive. ठीक है। अभी थोड़ा एक्चुअली बहुत दिन से यार ये गेम नहीं कर रहा था, मेरे को थोड़ा कमीशंस करना था। मेरे को कैरेक्टर्स उसके ना बहुत अपग्रेड करने हैं अभी मेरे। एम्बर ही अभी शायद टॉप में चल रही है, मैक्स किया। और एक अपना जो मेन कैरेक्टर है उसको और काई को मैंने किया टॉप में। मैक्स हो गए लोग, मैक्स आउट किया हूँ मैंने मेरे लेवल के हिसाब से। क्या सीन हो रहा है भाई? अरे ये क्या हुआ? वो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है भाई। ओह शिट, ये लोग कौन है यार? ये तो न्यू एनिमे लग रहे हैं यार। ओह ओह, अरे शिट। At
ये वही है क्या? Mondstadt's rodent ruler in the flesh. फ्लैश, वाओ यार, क्या विलेन है यार, लासिग्नार, Scurrying through the वाओ, streets looking for leftovers. Mondstadt calls क्या this a सही विलेन god. बना है. Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Brat. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Oopsie. You've held your tongue. Oh man. Oh shit, आप देख सकते हो यार क्या सीन हो गया है. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. मेरे को तो लगा था मर गया. Beauty is इसने a निकाल लिया waste उसे. when the beholder has no taste. Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. यार अब ये प्रिंसेस तो नहीं यार, ये वही है क्या एपिसोड की प्रिंसेस आफ्टर मच टाइम. और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ले रहा है यार. ये सब तो शो क्या कर रहा है, ब्लैंक क्यों हो गया. अच्छा आँख खोल रहा था क्या ये. ओके बेहोश हो गया था मैं. What planet are we? I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. Oh, thanks. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Left. Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. The symbol of. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before. Ah, barabar. Probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. अबे तो इतना जोर का बोल गई, वो तो सुन ही नहीं रहेगी क्या. क्या एंटीक पीस है यार. यार वो मेरे को लग रहा है प्रिंसेस है, लेकिन अभी फिक्स नहीं कहाँ पर है प्रिंसेस. लेट्स सी, देखते हैं. 700 मीटर है यार, देखते हैं. मैप में देखता हूँ चालू करके कहाँ तक है. लग ही रहा था यहाँ पर ही रहेगा वो, ट्री के अंदर. देखते हैं अभी ट्री के अंदर क्या होता है, कैसा. तो अभी आपको कैसा लग रहा है बता दीजिए कमेंट करके. अगर किसने देखा है तो बताओ कमेंट करके आगे क्या होने वाला है. नहीं मस्ती करो, बताओ मत कोई भी. और सस्पेंस तो रहना चाहिए थोड़ा. लेट्स सी. बहुत पावरफुल लग रही थी यार वो, कोई भी थी जो, मानना पड़ेगा. वो उसको ही दे दी. आर्कन पावर भी उसके सामने कुछ नहीं है यार. ये देखिए रहा इधर हील कर रहा है क्या. चलो हील करते हुए देखते हैं भी इसको. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. ये ठीक है यार, कुछ हुआ नहीं इसको. Same thing last time. So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. अरे बाबा, But साले I मैं बचा suppose है I और तो can let ordinary you people in on बोल the रहा है. secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. Okay. They use these visions to channel elemental power. In वो तो truth, पता है.
Every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. Okay. We call such people Allogenes. Allogenes. Okay. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. Archons. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. Ah. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Senora, number 8 of the Harbingers. Right. अरे बाबा, She number 8 and the इतना rest of powerful the थी. Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya. And with Okay. it, strength surpassing that of other mortals. Oh. The Tsaritsa of Snezhnaya? इतना powerful है यार वो. मानना पड़ेगा. वो भी number 8 है. अभी number She is one of the 5, seven, 6, the Tsaritsa who reigns from her 7. winter palace, and the one One person कितना that the powerful रहेगा? Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still, ऐसा था. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. Okay जी. What sort of god है? How should I put this? 500 years ago, I knew her well, But I can't but say. I can't say the same is true now. ये भी एक You god है see, लेकिन कोई समझ में A आता certain क्या ये? catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. क्यों But भाई? we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. एक को तो कर लिया हूँ You यार should अभी. head for 6 तो और Mondstadt's करना है. neighboring nation of Liyue. The Geo Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. Okay. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Okay. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, देखते हैं अभी नेबर सीटर में जाके. In any case, this year's rite of dissension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye. We're going. Okay. One moment, Windborn Outlander. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The अच्छा. birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. Okay. Destination चलेगा is ठीक not है. everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So Okay, that's that चलेगा. for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. Okay guys. तो लगता है मेरा एक अभी न्यू If you जर्नी, wanna एक न्यू chat, एडवेंचर now's चालू होने the वाला है अभी. time. A bard stays not always in a single climb. हाँ, क्या पूछने का इसका? सिग्नोरा के बारे में The पूछो क्या? Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. अच्छा. The slightest slip-up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. Okay. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? ये तो भाई सीन हो गया यार. If only the 7 nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the 7 nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use Use Dvalin Divine. as a bargaining chip against the Knights. Oh, अच्छा. Speaking of the liar, didn't Diluc say something like this before? He said that the Fatui could only run amok across the 7 nations and threaten the Knights because of the Harbingers. अच्छा ऐसा है क्या? Yes. As I said earlier, the Cryo Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. Okay. The Tsaritsa. I haven't seen her in 500 years. मेरे को लग रहा है यही वो What is गॉड she रखी जिसने thinking? किडनैप किया था. What's her plan? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the 7 all the more difficult. वो तो मुझे पहले If से you पता want to था. chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb.
एपिसोड और Kaya पूछते क्या? shared some new intelligence, you say? Oh, I see. So, the एपिसोड Abyss is a Order has a princess princess who who orchestrated the plan to corrupt Dvalin? They were probably trying to turn Dvalin into a weapon of war for the Abyss. Okay. But that said, I have never heard of any such princess of the Abyss Order. I think so too. Apparently. But how does a prince come out of nowhere and take command over the entire Abyss Order? वो भी बात है भाई, अचानक If से you कहाँ से आ want to जाएगी? chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. अभी फिर से क्या, इसको बैक करने का ऑप्शन नहीं है? मेरे को लग रहा है इसको सभी पूछना पड़ेगा एक साइड से। Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. नहीं भाई, नेक्स्ट ईयर तो मैं रुक नहीं सकता, इसी बार जाना है लिए इसमें। Act 3 completed, Song of the Dragon and Freedom. Chapter 1, Act 1 of the Land Advance Mondstadt. Phew. These are various way to obtain adventure XP. Okay, पता है मुझे। चलो एपिसोड खत्म हो गया। डोमेन ऑफ ब्लेसिंग अनलॉक। ओह वाओ, वो लगता है वो पीछे वाला अनलॉक हो गया। लेट्स सी, मैप में दिखेगा अभी। टड़ा टड़ा, मॉन्स्टर का, हाँ मॉन्स्टर के इधर ही पीछे कहीं पे। किधर अनलॉक हुआ है? ये तो एक ही नेशन हुआ। वुल्फ ट्री, ये कौन सा है? न्यू क्वेस्ट हो गया, लेजेंड ऑफ द डार्क नाइट हीरो। भाई ये तो बैटमैन का, डार्क नाइट हीरो बैटमैन का लग रहा है ये तो मुझे। टाइटल लगता है वहाँ से उठा लिया है। फिर से मुझे मॉन्स्टर्ड ही जाना पड़ेगा। चलो टेलीपोर्ट हो जाते हैं मॉन्स्टर्ड में। अगर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये गेम, और मुझे भी थोड़ा कोई गेम रिकमेंड कर दो यार। आपके लिए खेलूँगा मैं। चलो जाते हैं इसके पास, इसे पूछने बोल रहा है ये। अच्छा, ये इसके कैफे के अंदर जाना है। ओपन इट बे टावन। अरे यार, ये ऐसा क्यों जाता है यार? डायरेक्ट नॉर्मल डोर ओपन करके भी जा सकते हैं। ये पूरा ऐसा लगता है कहाँ जा रहा है, लोड होने लग जाता है पूरा। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, इससे मिलना था क्या? बैठ जाता हूँ पहले। अच्छा, मेरे को लगा बैठ के बात कर सकते हैं। बैठ के तो बात कर लिया कर, थोड़ा खड़े रहो क्या? You got a taste for adventure too, huh? पहले से भाई ऑटो करना पड़ेगा। I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. Paimon. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. Oh. It's the tale of the Dark Knight Hero. क्या डर गई? Hey, look. Do you want to hear the story or not? What? What did the bartender just say? Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. Oh. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Okay. No one. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless,
The sightings confirm that the Dark Knight hero is more than just a groundless rumor. चलो देख लेते हैं, हम लोग को ढूंढना रहेगा। मेरे को लग रहा है डार्क नाइट हीरो। That's more or less देखते हैं everything I मिलता है know. कि नहीं। मिल गया If you तो want to सही know है। more, ask around in the plaza. प्लाजा, अब I प्लाजा need to जाना serve some पड़ेगा। customers. कस्टमर तो दिख ही नहीं रहे थे यार। Dark Knight hero. Seems like your standard cookie cutter urban legend, but just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. हाँ, आई एम रेडी यार, प्लाजा जाते हैं। और क्या, फिर से एंट्री करना पड़ेगा। मेरा न्यू जर्नी स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं अभी इसमें क्या क्या मिलता है। फर्स्ट वाले में अपन ने डायरेक्ट लाइक ड्रैगन से फाइटिंग कर लिया था अपन ने, तो सही था, इंटरेस्टिंग था। मुझे खाली लोग कहते हैं यार एडवेंचर रैंक करने बोलते हैं यार, वो अपडेट कर फिर रैंक अपग्रेड करने में पूरा वो लग जाता है यार। कमीशन करो, ये करो। ऑनलाइन फ्रेंड्स भी थे यार 2-3, मैं बीच में लोग अपने फ्रेंड लोग के साथ, लेकिन पता नहीं यार कहाँ से। मैं पूछना ही भूल गया कहाँ से। पूछोगा अगर आप लोग में से कोई खेलता है तो यार अपना आईडी मेंशन कर दो, तो ऐड फ्रेंड करके हम लोग अभी खेलेंगे। ग्रुप बना के मैंने रूम क्रिएट किया है वैसे टोरपिन में, तो आप कर सकते हो। चाहिए तो यार डिस्कॉर्ड में भी कर दूंगा मैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट कर देखते हैं, डार्क नाइट राइज का और अभी खोलेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए आप बस गेम खेलते रहो और घर पे रहो। बाय।